Good morning students. Now we will start new exercise. Find out page number 96. Divide the following. So we will do in notebook also. So take out your maths notebook. First question, 10 divided by 5. So we know that 5 1 ja 5, 5 2 ja 10. 5 2 ja 10. So to write in quotient block. So write here 2 and 10 right here. Okay, so 10 minus 10 is equal to 0, so right here is 0, so quotient is 2. Next, 28 divided by 4. So we know that 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, 4 3 ja 12, 4 4 ja 16, 4 5 ja 20, 4 6 ja 24, 4 7 ja 28. So 4 7 ja 28. So right here 7 and 28 right here and do subtraction. So 28 minus 28 we get 0, so 7 is quotient. Next, 18 divided by 2. So we know that 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 3 ja 6, 2 4 ja 8, 2 5 ja 10, 2 6 ja 12, 2 7 ja 14, 2 6 ja 2 8 ja 16, 2 9 ja 2 8 ja 16, 2 9 ja 18. So right here 9 and 2 9 ja 18. So right here 9 and right here 18. 18 minus 18 is equal to 0. Okay, so 9 is quotient. Next, 18 divided by 6. So 6 3 ja 18. So 3 right here and 18 right here. 18 minus 80 is equal to 0. So 3 is quotient. Next, 54 divided by 6. So 6 9 ja 54. We know that 6 9 ja 54. So 9 is quotient. So right here 9 and 54 right here and do subtraction. So 4 minus 4 is equal to 0 and 5 minus 5 is equal to 0. So 9 is quotient. Next, 56 divided by 7. So 7 8 ja 56. So 8 is quotient, right here quotient 8 and 56 right here 56 and do subtraction. So 56 minus 56 we get 0. So 8 is quotient. Next, 27 divided by 3. So 3 9 ja 27. 3 9 ja 27. So 9 right here and 27 right here and do subtraction. So 7 minus 7 is equal to 0 and 2 minus 2 is equal to 0. So 9 is quotient. Next, 64 divided by 8. 64 dividend and 8 divisor. So 8 8 ja 64. So right here 8 and 64 right here and do subtraction. So we get 0. So 8 is quotient. Next, 36 divided by 4. So 4 we will write here table of 4. 4 9 ja 36. So 9 right here and 36 right here. 36 minus 36 we get 0. So 9 is quotient. Next, 24 divided by 2. So first 2 divided by 2. Okay, so 2 1 ja 2. So right here 1. यहाँ हमारा 2 डिवाइड हो सकता है 2 से, तो हम पहले फर्स्ट डिजिट में ही डिवाइड करेंगे. 2 डिवाइडेड बाय 2. सो 2 1 ja 2. So right here 1. Okay, right here 2. Okay, 2 minus 2 is equal to 0 and 4 left. So right here 4. Okay, 4 यहाँ हम नीचे लिखेंगे. अब 4 में डिवाइड करेंगे 2 से. ओके, सो 2 2 ja 4. 2 1 ja 2, 2 2 ja 4. So 2 right here in next block and 4 right here. So 4 minus 4 is equal to 0. So quotient is 12. Okay, next, 42. 42 divided by 2.
42 divided by 2. So first 4 divided by 2. 4 में 2 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ 4 divided by 2, तो 2 2 जा 4. So 2 right here in quotient block and 4 right here. 4 minus 4 is equal to 0 and 2 left, so right here 2. Okay, now 2 divided by 2, so 2 1 ja 2. So 1 right here, next block, and 2 right here. So 2 minus 2 is equal to 0. So quotient is 21. Next, 85 divided by 5. So first 8 divided by 5. So 5 1 ja 5, 5 2 ja 5 1 ja 5 and 5 2 ja 10. ओके, तो यहाँ हमारा 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10. यहाँ पर हमारा 8 इसके बीच में, 5 और 10 के बीच में आएगा. तो यहाँ हम स्मॉलेस्ट नंबर को हमेशा लेते हैं, बिगेस्ट नंबर को नहीं ले. या तो हमारा नंबर इक्वल आना चाहिए या हम स्मॉलेस्ट नंबर को लेंगे. हमेशा डिवाइड में बिगेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को ही माइनस किया जाता है. ओके, बिगेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करते हैं हम. तो यहाँ हम बिगेस्ट नंबर को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ हमारा ये 8 जो है स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ हम 5 को लेंगे. ओके, सो राइट 5 1 जा 5. सो 1 राइट इन क्वोशंट प्लेस एंड 5 राइट हेयर. ओके, and now 8 minus 5 is equal to 3. So answer is 3, and so 3 is the smallest number to 5. So 5 is left, right here 5. Okay, so it will be 35. So now 35 divided by 5. So 5 7 ja 35. So 7 right here and 35 right here. Okay, so 35 minus 35, so answer is 0. So quotient is 17. एक बार फिर से रिपीट करेंगे. 85 में 5 से डिवाइड देंगे, तो फर्स्ट 8 में डिवाइड करेंगे क्योंकि 8 में जा सकता है, ये 5 से बड़ा है. तो हमने दिया यहाँ 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10. तो 8 हमारे यहाँ बीच में आया, तो फर्स्ट 10 इससे ज़्यादा है 8 से, तो हम 5 को लेंगे. या तो 8 हमारा आना चाहिए था, लेकिन 8 यहाँ पर नहीं आया है, तो हम 5 को लेंगे. 5 1 जा 5, सो राइट हेयर 5 एंड 8 माइनस 5, सो वी गेट 3. सो राइट हेयर 3 एंड 5 इज लेफ्ट, सो राइट हेयर 5. यहाँ 3 में 5 से 3 में डिवाइड 5 से नहीं हो सकता है, तो यहाँ हम 5 लेंगे. इट विल बी 35. ये 35 बन गया एंड 35 डिवाइडेड बाय 5. तो 5 7 जा 35, राइट हेयर 7 एंड 35 राइट हेयर. 5 minus 5 is equal to 0 and 3 minus 3 is equal to 0. So quotient is 17. And now we will do next question. 92 divided by 4. So first 9 divided by 4. 4 बन जा 4 and 4 2 जा 8 and 4 3 जा 12. 12 8 9 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ 4 बन जा 4, 4 2 जा 8 को लेंगे. and 2 quotient right here in 2 and 8 right here and 9 minus 8 is equal to 1. so right here 1. अब यहाँ हमारा 2 है, 2 ले लेंगे. 2 is left, so right here 2 and it will be 12. so 12 divided by 4. so we know that 4 3 ja 12. so 3 right here and 12 right here. So 12 minus 12 is equal to 0. So 23 is quotient. Next 99 divided by 9. So first 9 divided by 9. So 9 1 ja 9. So 1 right here and 9 right here. 9 minus 9 is equal to 0 and 9 is left. So right here 9. So 9 divided by 9. Next 9 divided by 9. So we get 9 1 ja 9. So right here 1 and 9 right here. 9 minus 9 is equal to 0. So it is 11 question. 98 divided by 7. So first 9 divided by 7. तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 9 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 1 जा 7, 1 right here and 7 right here. 9 minus 7 is equal to 2 and right here 8
So it will be 28 and now 28 divided by 7. 28 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28. So 4 right here and 28 right here. 28 minus 28 is equal to 0 and 14. It is question. Next 65 divided by 5. So first 6 divided by 5. 5 बन जा 5. So 1 right here and 5 right here. 6 minus 5 is equal to 1. And next 5 right here. So it will be 15 and 15 divided by 5. So 5 बन जा 5. 5 2 जा 10. 5 3 जा 15. So 3 right here and 15 right here. 15 minus 15 is equal to 0. So 13 is question. Next 63 divided by 3. So first 6 divided by 3. 3 2 ja 6. So 2 right here and 6 right here. 6 minus 6 is equal to 0 and 3 is left. So right here 3 and 3 divided by 3. So 3 1 ja 3. Right here 1 and 3 minus 3 is equal to 0. So right here 0. Next 48 divided by 3. So first 4 divided by 3. So 3 1 ja 3. 3 2 ja 6. 4 से ज़्यादा होगा तो यहाँ हम लिखेंगे 3 1 जा 3. राइट हेयर 1 एंड 3 राइट हेयर. 4 minus 3 is equal to 1 and 8 is left. So right here 8, it will be 18 and now 18 divided by 3. So 3 6 ja 18. 6 right here and 18 right here. 8 minus 8 is equal to 0 and 1 minus 1 is equal to 0. And quotient is 16. Next 62 divided by 2. So first 6 divided by 2. So 2 3 ja 6. 3 right here and 6 right here. 6 minus 6 is equal to 0 and next 2 divided by 2. So we know that 2 1 ja 2. So 1 right here and 2 right here. 2 minus 2 is equal to 0. So quotient is 31. And next 88 divided by 4. So first 8 divided by 4. So 4 2 ja 8. 4 2 ja 8. 4 1 ja 4 and 4 2 ja 8. So 2 right here and 8 right here. 8 minus 8 is equal to 0 and 8 is left. So right here 8 and 8 divided by 4. So we know that 4 2 ja 8. So 2 right here and 8 right here. 8 minus 8 is equal to 0.